हरिओम तत्सत। चलिए आज आप मेरे साथ करिए सूर्य नमस्कार। तो मैं थोड़ी उसमें करेक्शंस और हर पोज को कैसे करना है वो एक बार आपको बता देती हूँ। उसके बाद आज हम 12 टाइम्स सूर्य नमस्कार करेंगे। सो एसेंशियली 12 टाइम्स ही सूर्य नमस्कार करना चाहिए, बिकॉज उसमें जो 12 पोजेज हैं उसके लिए 12 टाइम्स बताया गया है, विच इज राइट टाइम 6 टाइम एंड लेफ्ट टाइम्स 6 टाइम्स हमें करना है। तो एक बारी आप मेरे साथ ये देखिए कि हमें हर पोज को कैसे करना है। सो सबसे पहले वी विल बी जॉइनिंग आवर फीट टुगेदर। हमारी पूरी बॉडी स्ट्रेट लाइन में होगी और हम सीधा देखेंगे। उसके बाद वी हैव टू जस्ट कीप आवर पाम्स टुगेदर इन फ्रंट ऑफ आवर बॉडी, और उसमें कुछ बहुत इलैबोरेट नहीं करना है, नॉर्मल एकदम ऐसे करके, नॉर्मल ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल करना है। उसके बाद इनहेल करके हम लोग स्ट्रेच अप करेंगे और आर्च करेंगे बैक। तो आप साइड में देख सकते हैं। इनहेल करके जितना आप आर्च बैक कर सकते हैं, एक्चुअली आपको नीज बेंड नहीं करना है, बट अगर उससे आप और बेटर आर्च बैक कर पाते हैं तो यू कैन ट्राई। उसके बाद हम लोग एक्सहेल करते हुए नीचे जाते हैं और एक्चुअली पाम्स और आपकी फीट सब एक लाइन में रहते हैं। तो जब हम लोग ये करते हैं तो उसके लिए इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी बेंड फ्रॉम द लोअर बैक सो दैट हमारे को और बेंड मिलता है। जैसे मैं आपको दिखा सकती हूँ, जब हम एक्सहेल करते हुए नीचे जा रहे हैं, एक्सहेल, ये नॉर्मल बेंड है। और अब हम सेकेंड टाइम मैं दिखाऊंगी कैसे हम नीचे से बेंड करके जाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं कितना बेटर बेंड है। तो जब हम बेंड करते हैं तो उसके बाद हमारे को अपने हेड को नी के पास रखना है एंड नीज एंड लेग एकदम स्ट्रेट। तो हम ऐसा करेंगे। उसके बाद हमारा राइट या लेफ्ट लेग पीछे जाएगा। सो इन दैट केस अगर हमारा राइट लेग है तो हमारा जो राइट लेग जो पीछे जाएगा, उसका जो फुट है वो आउटसाइड पॉइंट करेगा और हम ऊपर देखेंगे और हम ब्रीथ करते रहेंगे। इनहेल करके हम इनहेल पे रहेंगे। उसके बाद हमारा रिटेंशन है। उसके बाद हम लोग ब्रेथ को रिटेन कर लेते हैं। ये प्लैंक पोजीशन है या स्ट्रेट पोजीशन है और यहाँ पे हम ब्रेथ को रिटेन करते हैं। एंड नाउ वी हैव टू लुक हियर। हमारे को इधर देखना है, ना सीधा और ना ऐसा। तो ये रहेगा स्ट्रेट और आपकी जाएगी विजन कहीं कुछ बीच में, हैंड्स के बीच में। इसमें जब आप रिटेन करते हैं तो अब आप देखेंगे कि कैसे मेरे फीट भी जो है फ्लेक्स्ड है और जो बॉडी का वेट है वो मेरे आर्म्स पे रहता है और जो आपकी बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन पे है। रिटेन। उसके बाद आपके नीज, चेस्ट या हेड, फोरहेड या चिन डाउन जाएगा और एक्सहेल ऐसे या इस तरीके से। ये एक्सहेल की पोजीशन है। इसमें आपका बटक ये ऊपर रहेंगे और जो आपके एल्बोज हैं वो इनसाइड की तरफ रहते हैं। आपको ये मेक श्योर करना है कि जब हम स्लाइड करके ऊपर जाते हैं तो हमारे एल्बोज थोड़े से इनसाइड की ओर रहते हैं, थोड़े बेंट रहते हैं एंड एकदम से स्ट्रेट नहीं होते हैं। यू हैव टू इनहेल एंड लुक अप एंड चेस्ट ओपन। हमें इस तरीके से स्ट्रेट एल्बोज नहीं रखने हैं। दिस इज नॉट राइट। वी हैव टू हैव इट लाइक दिस। उसके बाद आपको एक्सहेल करना है एंड वी गो डाउन इन इन्वर्टेड वी पोजिशन, जिसमें वी विल लुक एट आवर नीज और टोज। इस तरीके से आपका पोजिशन बना रहेगा। दिस इज एक्सेलेशन का पोजिशन एंड हियर वी विल ट्राई टू टच आवर
feet down on the floor. जो आपका वेट रहेगा वो आपके हैंड्स में भी रहेगा, अच्छे से स्ट्रेच फॉरवर्ड रहता है. एंड देन यू हैव टू ब्रिंग इन योर फुट फॉरवर्ड, योर फुट, योर हैंड्स, ये जो है ये सब एक लाइन में रहेंगे. एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट इट गोज इन वन शॉट, या फिर आप ऐसे उसे ड्रैग भी कर सकते हैं. जब आप इसके बाद इस पोजीशन के बाद यहाँ पे आते हैं तो आप इसे बाहर से भी ला सकते हैं जिस तरीके से अभी दिखाया, या फिर you can just, yes, like this, you can just put all the pressure and look up. And then you have to keep both the feet together, and जो आपके hands है वो भी aligned रहेंगे, trying to keep your knees straight but थोड़े से bend हो सकते हैं. Then you inhale, stretch up, arch your back, जितना आप arch back कर सकते हैं. एक्सेल करते हुए रिलीज करेंगे एंड फिर नमस्कार करेंगे. इसमें भी आपको अपने फीट टुगेदर रखने हैं और नमस्कार का पोजीशन रखना, और कुछ नहीं करना है. एंड इसके बाद अब हम और प्रैक्टिस कर सकते हैं. नाउ वी कैन डू मोर राउंड्स, सो लेट्स डू इट. नेक्स्ट वी विल डू टुगेदर. फीट टुगेदर, इनहेल and exhale. Inhale, exhale, palms together. Inhale, stretch up, arch your back. Exhale, bend down and forward. Look at your knees. Right leg back, inhale, look up. Flex your feet. Retain both feet together. Exhale, knees, chest, chin or forehead down. Inhale, slide forward, look up. Exhale, inverted V position. Inhale and right leg forward, look up. Exhale, both feet together. Look at your knees. Inhale, stretch up, arch back. Exhale, release. Inhale. Exhale, palms together. Inhale, stretch up and arch your back. Exhale, bend forwards and down. Look at your knees. Inhale, left leg back, look up. Flex your feet, body in straight line, retain your breath. Exhale, knees, chest, chin or forehead down. Inhale, look up, chest open, slide forward. Exhale, hips up, look at your knees or toes. Inhale, left leg forward. Both feet together, exhale. Inhale, stretch up, arch your back. Exhale, release. Inhale. Exhale. That was one round. Palms together. Inhale, stretch up and arch your back. Exhale, bend forward, down. And look at your knees. Inhale, right leg back. Look up. Flex your feet. Retain your breath. Exhale, knees, chest, chin or forehead down. Inhale, slide forwards, chest open. Exhale, inverted V position, hips up. Look at your toes or knees. Inhale, right leg forward. Exhale, both feet together. Inhale, stretch up, arch your back. Exhale, release. Inhale, exhale. Inhale, exhale, palms together. Inhale, stretch up and arch your back. Exhale, bend forward and down. At your knees. Inhale, left leg back, look up. Retain your breath, both feet together. Exhale.
knees, chest, chin or forehead down. Inhale and slide forwards, chest open, look up. Exhale, go into inverted V position, hips up, look at your toes on knees. Inhale, left leg forward, look up. Exhale, both feet together, look at your knees. Inhale, stretch up, arch your back. Exhale, release. Inhale, exhale. Inhale, exhale, palms together. Inhale, stretch up, arch your back. Exhale, bend down, looking at your knees. Inhale, right leg back, look up. Retaining your breath, both feet together, body in straight line. Exhale, knees, chest, chin or forehead down. Inhale, look up, chest open, slide forwards. Exhale, inverted V or hips up. Inhale, right leg forward, look up. Both feet together, exhale. Inhale, stretch up, arch your back. Exhale and release. Inhale. Exhale, palms together. Inhale, stretch up and arch your back. Exhale, bend forward and down. Inhale, left leg back, look up. Retain your breath, flex your feet, both feet together. Body in a straight line. Exhale, knees, chest, chin or forehead down. Inhale and open your chest, look up. Exhale, inverted V position, hips up. Inhale, left leg forward, look up. Both feet together, exhale. Inhale, stretch up, arch your back as much as you can. Exhale, release. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale and exhale. Stretch up, arch your back. Exhale, bend forward and down. Inhale, right leg back, look up. Retaining your breath, body in a straight line. Exhale, knees, chest, chin or forehead down. Inhale, stretch forwards and up, chest open, look up. Exhale, hips up, inverted V, look at your toes. Your arms straight. Inhale, right leg forward, look up. Exhale, both feet together, look at your knees. Inhale, stretch up and arch your back. Exhale, release. Inhale, exhale, palms together. Inhale, stretch up and arch your back. Exhale, bend forwards and down. Inhale, left leg back, look up. Retain your breath, both feet together, plank position. Exhale, knees, chest, chin and forehead down. Inhale, stretch and slide forward, look up, chest open. Exhale, inverted V or hips up. Inhale and put your left leg forward, look up. Exhale, both feet together, look at your knees. Inhale, stretch up, arch your back. Exhale, release. Inhale, exhale. Inhale, exhale, palms together. Inhale, stretch up and arch your back. Exhale, bend forwards and down. Inhale, right leg back, look up. Retaining your breath, flex your feet, both feet together, body in a straight line. Exhale, knees, chest, chin or forehead down. Inhale, slide forwards, look up, chest open.
Your elbows should be inside. Exhale, inverted V or hips up. Inhale and put your right leg forward. Look up. Exhale, both feet together. Look at your knees. Stretch forwards and upwards. Inhaling, arch your back. Exhale, release. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale, palms together. Inhale, stretch up and arch your back. Exhale, bend forward, down, trying to touch your toes. Inhale, left leg back, look up. Retaining your breath, body in a straight line. Exhale, knees, chest, chin or forehead down. Inhale, slide forwards, look up, chest open. Your elbows should be bent. Exhaling, you come to the inverted V or hips up position. And then inhale, left leg forward, look up. Exhale, both feet together. Look at your knees. Inhale, stretch forwards, upwards and backwards. Arch your back. Exhale, release. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Keeping your feet together, your body in a straight line. Inhale. Exhale, palms together. Inhale, stretch up. Arch your back as much as you can. Exhale, bend forwards, down. Inhale, right leg back, look up. Retaining your breath, flex your feet, body in a straight line, plank position. Exhale, knees, chest, chin or forehead down. Hips up. Inhale, stretching forwards, upwards, chest open. Look up. Exhaling, coming to inverted V or hips up position, looking at your knees or toes. Inhale, right leg forwards, look up. Exhaling, both feet together, looking at your knees. Stretching forwards, you will inhale, stretch up, arch your back, and then we exhale and release. Inhale. Exhale. Palms together. Inhale, stretch up, arch your back. Exhale, bend forwards and down. Inhale and put your left leg back. Looking up. Retaining your breath. Flexing your feet. Both feet together, body in a straight line. Exhale, knees, chest, chin or forehead down. Inhale, sliding forwards, you will open your chest, look up. Exhale, hips up, look at your toes. Exhale, inhale, left leg forward, look up. Exhale, both feet together. Looking at your knees, trying to touch your toes. Inhale, stretch forwards, upwards and backwards, arching your back. Exhale, release. Inhale, exhale and relax. You can now open your legs. Shake your body a bit, shake your legs, shake your hands. And relax. Keep breathing normally now. And after that, we can always come in Shavasana. So this is how it was. ये है सूर्य नमस्कार. And I hope आपको ये help हुआ. नमस्कार.